आज हम बात करने वाले हैं बुक्स दैट यू कैन फिनिश इन वन डे. Of course, obviously, we are not going to talk about the big fat books like 200, 300 pages book, but वो छोटी छोटी किताबें जो आप एक दिन में फिनिश कर सकते हो या मैक्सिमम 2 दिन में फिनिश कर सकते हो ताकि आप रीडिंग में वापस आ सको, आपको फिर से रीडिंग की हैबिट लग जाए. सो दीज आर द बुक्स दैट आई हैव फिनिश्ड इन लेस देन वन डे. इफ आई कैन देन यू कैन ऑल्सो फिनिश ऑल ऑफ दिस बुक इन लेस देन वन डे or probably 1 week. I will say if you like this content then make sure you like this video, comment on what is your favorite book and share with your friends. उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा but this will help me a lot to build a better reading community. First book is The Little Prince by Antino. ये बुक आपने बहुत बार देखी होगी या बहुत सारे बुक ट्यूबर्स ने आपको रेकमेंड की होगी एंड दिस इज वर्थ द हाइप. इसका सेकेंड पार्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे बट लेट्स टॉक अबाउट दिस बुक फर्स्ट. ये बुक ट्रांसलेटेड है फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट अ स्मॉल बॉय एंड द नैरेटर जो एक अलग प्लैनेट से आया होता है. उसके थिंकिंग अलग होती है, उसके लाइफ का देखने का पर्सपेक्टिव अलग होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है एंड ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड द नैरेटर. ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है लाइफ में. द लिटिल प्रिंस इट इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट स्टोरी अबाउट लोनलीनेस, फ्रेंडशिप, लव, फैमिली, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से बताया गया है. ये बेसिकली जो स्मॉल बॉय यानी कि हमारा लिटिल प्रिंस है, ही ट्रैवल्स प्लैनेट टू अंडरस्टैंड विजडम, अंडरस्टैंड बहुत सारी विजडम के रिलेटेड चीज़ें एंड ही अंडरस्टैंड समथिंग दैट ऑल ग्रोन अप्स आर वंस चाइल्ड. बट वो चाइल्डनेस, वो चाइल्ड का बचपना, वो सब कुछ वो लोग बड़े होने के बाद भूल जाते हैं. तो इफ़ यू कीप योर माइंड ओपन, इफ़ यू कीप न्यू थॉट्स, इफ़ यू आर ready to understand new thoughts or look at same thing from the different perspective, then this book is definitely gonna help you and you can definitely finish this in a one day because it's a very very small book and very little book. You can find the link in the description and you are going to love it for sure. The second book is the second part of the first book, The Return of Young Prince. It's a kind of sequel of the first book, The Little Prince, क्योंकि वो भी अब बच्चा नहीं रहता. ही बिकम द एडल्ट, ही केम इनटू द टीन एंड उसके साथ बहुत सारे एडवेंचर्स हो जाते. नाउ हाउ ही लुक एट द लाइफ, नाउ हाउ ही वांट टू सी द लाइफ, वो सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई है. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट. सो नाउ ही डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट विथ हीज टीनी प्लैनेट एंड ही जस्ट ट्रैवलिंग. उसका प्लेन क्रैश हो जाता है. अगेन द सेम स्टोरी दैट वी सॉ इन द फर्स्ट बुक एंड सेम उसकी लाइफ की स्टोरीज, वो एडवेंचर्स वगैरह बताता है एंड अगेन ऑल द लेसन्स, ऑल द विजडम यू आर गोइंग टू सी इन दिस बुक. बट द प्रॉब्लम विद दिस बुक इज दिस इज नॉट दैट ग्रेट बुक एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. अगर आपने फर्स्ट बुक पढ़ी फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड बुक उसके बाद आप पिकअप करते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू एन्जॉय द सेकेंड बुक उतना जितना फर्स्ट बुक एन्जॉय कर पाओगे. इसमें विजडम वगैरह है बट दैट इज़ अ वेरी ऑन एवरेज लेवल, उतनी ग्रेट विजडम नहीं है. सो आई विल से यू कैन ऑल्सो स्किप दिस बुक बट यू रियली वांट टू गेट इनटू द रीडिंग एंड यू जस्ट वांट टू रीड फॉर द टाइम पास, देन यू कैन डेफिनेटली रीड द रिटर्न ऑफ द यंग प्रिंस. द थर्ड बुक इज ऑफ माइस एंड मेन, अ वेरी great story about two people who are migrated. The first one is George, I guess, and the second one is Lenny. तो उन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में ये स्टोरी है, उन दोनों के लाइफ के बारे में ये स्टोरी है. सो जॉर्ज इज अ बोथ आर इनटू ऑन द वे टू कैलिफोर्निया, बस में से उतर जाते हैं एंड देयर स्टोरी बिगिंस. सो जॉर्ज इज स्पेसिफिकली एक छोटा सा टॉल होता है, ही इज़ अ वेरी स्मॉल एक्चुअली एंड डार्क, शार्प फेस्ड एंड समथिंग लाइक दैट, कि बहुत ही डार्क होता है और स्ट्रॉन्ग फीचर्स के साथ होता है. एंड ऑन द अदर हैंड लीनी इज ऑल अबाउट शेपलेस फेस, कि उसका फेस ही बहुत ही शेपलेस होता है एंड शी इज़ नॉट मच दैट इन टू द इंटेलेक्चुअल पार्ट. शी इज़ वेरी डिपेंडेंट, शी इज़ वेरी काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन द जॉर्ज एंड इन दोनों की स्टोरी के बारे में है. सो लीनी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट एंड लीनी लव्स अ लॉट ऑफ थिंग्स बट ऑल्सो शी किल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो लीनी एक डेड माउस कैरी कर रही होती है एंड जॉर्ज जो माउस को फेंक देता है एंड उसके बारे में ये दोनों की स्टोरी है. देन दे गेट इनटू व्हाट इज़ द फ्रेंडशिप, हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. उन दोनों का ड्रीम होता है कि एक छोटा सा फार्म, एक थोड़ा सा लैंड खरीदने का, वहाँ पे फार्मिंग करने की एंड हैप्पीली एवर आफ्टर लाइफ, दैट काइंड ऑफ स्टफ. बट उसमें बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे प्लॉट्स ट्विस्ट होते हैं दैट यू आर गोइंग टू डेफिनेटली एन्जॉय. So this book is a very short book and you will definitely enjoy this book about the friendship, understanding each other, how two opposite person
can survive together. So all of those stuffs you will find in this book. The next very cliche book that you must have already know, and बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की होगी. कुछ लोग को ये बुक पसंद है, कुछ लोग को ये बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है. The book name is The Alchemist by Paulo Coelho. So ये book, obviously the reason I have added this book is because this book is easy to start, this book is easy to finish and easy to understand. It's a story about one shepherd and उसके लाइफ के बारे में है. वो लाइफ के ट्रैवल जर्नी, उसको खजीना ट्रेजर चाहिए होता है एंड उसको पता होता है कि खजीना उससे कहाँ पे मिलने वाला है. So he goes there, he try to understand that, he try to go on this journey of discovering yourself, and at the end of the day उसे treasure कहाँ पे मिलता है, that is something secret in this book जो आपको last में पता चलेगा. Some people find this book average, some people find this book excellent because this book is filled with lot of quotes and the life lessons. So if you have never read that, then you can definitely go give it a try. But if you have already read the books like To Kill a Mockingbird, yeah, The Thousand Splendid Suns, then you will find this kind of book is little average. So I won't suggest that if you have read that book, but if you are just starting and wanted to finish something quickly, then The Alchemist is your book. The next book that I will say is The Animal Farm. Don't read this book because it's fun, read this book because it's really amazing. If someone tells you or if someone asks me कि यार एक क्लासिक बुक बता दो जो बहुत ही अच्छी हो लेकिन बहुत ही शॉर्ट हो, then I will definitely going to suggest Animal Farm because it's such a cool book, it's such a new idea, it's such a great thing to understand how the Animal Farm books works. It's a very different book than what a normal person will read. So it's a story about animals who are going to do the rebel against their farmer or against their this owner. So animals, they have the hope कि अगर हम rebel करेंगे against the human, so they can create a society where everyone is equal, everyone is happy, everyone have their own rights. So that is something they have there in their mind कि animals के mind कि उनको ये सारी चीज़ें करना है, इसलिए they become rebellion against the human. But the best thing is द रिबेलियन जिसने लीड किया होता है वो ही पलट जाता है, वो ही अपोजिट चला जाता है. देन व्हाट हैपन्स? सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि हाउ एनिमल फार्म कैन वर्क एंड हाउ दोज रिबेलियन थिंग वर्क, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दैट. इट्स सच अ कूल बुक. आई विल हाईली रिकमेंड यू टू रीड एनिमल फार्म बिकॉज इट्स जस्ट अमेजिंग. द नेक्स्ट बुक दैट आई वांट टू सजेस्ट इज ट्यूसडे विद मॉरी. I will only say go and read this book. Like literally that's the only way I am going to say it. I am not going to go and give deep down कि ये बुक में क्या है, ये बुक में ट्यूसडे विद मॉरी मतलब उस मॉरी का मतलब क्या है, वाई ट्यूसडे विद मॉरी ओनली, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. वो बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपने अभी तक ये बुक पढ़ी नहीं है देन यू आर मिसिंग something, like really important, you are missing something. It's a kind of a non-fiction book with the storytelling format and it's just amazing book to understand life. It's just amazing book to understand everything. And the reason I said this book you can finish in one day because the way the story is formatted, the way everything is calculated, it is just amazing. Like it is going to be the great book to read and to understand wisdom, to understand life, to understand the story behind the Mori and everything is going to help you a lot. So definitely go and read Tuesday with Mori. The next book that you can finish in one day is The 5 People You Meet in Heaven, another book by the Michelle Obama. This book is much better than average, obviously less than the Tuesday with Mori, but much better than average I will say. It's a story about the character called AD कि उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. He always wanted to do something great in his life. He works as a maintenance in the amusement park. So वहाँ पे एक free fall होता है and free fall के अंदर बहुत सारे problems चल रहे होते हैं and in that amusement park and he tries to save a lot of people. And there is this one cart कि जो still that is falling and उसके नीचे एमी करके एक लड़की खड़ी होती है and वो उसके ऊपर गिरने वाले. He try to save her and उसको बचाते उसके सर पे वो कार्ट गिर जाता है and he dead. Now he is on the way to heaven. He meet 5 people and वो 5 people उससे क्या बताते हैं, वो 5 people से वो क्या सीखता है. So it's a story about that. The next book that you can finish in one day is none other than We Should All Be Feminist. Another great short little book I will say because it's just
very very simple, like hardly 40-50 pages book, but it's all about understanding the feminism. It's all about understanding what is the meaning of that. It's basically a essay or the novella converted from the Chinmayananda's Nagoji's TED talk into a short novella, and that you are going to find everything about that why everyone should be feminist. So I won't go deep dive into each and every stories because it's a very self-explanatory. So make sure you go read this book, We Should All Be Feminist. You are going to finish in less than 1 or 2 hours. The next two books are specifically suspense and the thriller book. The first book is none other than my favorite writer, Agatha Christie, and Then There Were None. So a great book, all about suspense, all about life. The reason I can say this book you can finish in 1 day, because the way the story starts and the way the mystery unfolds is just amazing. If I want to talk about the plot, this book is Agatha Christie's iconic murder mystery. So in there is this mansion, there are 10 people and they are described as a rhythm, and 10 down to none. So everyone starts getting murdered and guests wanted to know who is the murderer. So like in the mansion there are 10 people and एक के बाद एक murder होना शुरू हो जाते, and the guest wanted to know कि कौन actually में murderer है. The way story is made, the everything in this book is such a amazing level, because at the dinner table सारे owner, housekeeper वगैरह सब लोग आ जाते हैं. Then there are this recorded voice and they try to understand who is this. So everything all about that, the mystery is just amazing. So Agatha Christie, like I have read almost all the book by the Agatha Christie, and this is one of the favorite book that you can finish it in less than 1 day. And the last book that I want to add in this list is Elevation by the Stephen King, another mystery suspense book. It's a very short book written by the Stephen King. Usually उसके सारे books बहुत बड़ी होती है, but this book is definitely a short book and definitely a good read that you can finish it in the 1 day. It's all about the story about the stock. It's all about story about the Scott and how he become everything, and उसके friendship के बारे में उसके friends आते हैं and all about that. Like I don't want to go deep down because otherwise I will give the suspense part about this and I don't want to be the spoiler here. So go read Elevation by the Stephen King. So these are the books that you can definitely finish in 1 day. If you want a more detailed review or detailed review, then make sure you join the newsletter where we share a lot of free stuff that you can get, which I usually don't share on YouTube, that you will find definitely on my newsletter. So that's everything about that. If you're looking for more book reviews, check out this playlist where I shared everything about the book review. And if you're looking for more and more book recommendations that are good, then check out this playlist where I shared everything about that. So that's all for the today's video. See you in the next one. Bye bye. Take care.